So let us start with the next topic, that is what sexual reproduction in human being. Now this is the sexual reproduction in what human being. So as you know, the human being, the reproductive period जो है वो पर्टिकुलर डे के बाद में ही स्टार्ट होता है, कुछ सालों के बाद में चालू होता है. सिंस फ्रॉम द बर्थ जो भी ग्रोथ होगी ये नॉन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ रहती है. ओके, बोथ इन द मेल एंड फीमेल एट द एज ऑफ 13. ओके, the period which will start in which the reproductive organs start functioning. So that period in which some hormonal changes will be involved in our body, male as well as in the female, and these hormones which are responsible for these changes, okay, these changes are called as secondary sexual characteristics. So आपको पता होगा कौन से हार्मोन लगते हैं इसके लिए. हाँ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सुना है आपने, FSH. तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन बनाता है. पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो एंडोक्राइन ऑर्गन. इट विल प्रोड्यूस द रिलीजिंग फैक्टर, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर्स that will stimulate the pituitary gland to produce the particular another hormone. Then the pituitary gland will produce a different hormone like follicle stimulating hormone, luteinizing hormone. So these hormones are responsible for the changes in male as well as in the female. In male, it will stimulate the testes to produce the another hormone by the testes called as what? Testosterone or androgen. So in male, the testosterone or androgen is responsible for the development of the secondary sexual characteristics. In female, it is the hormone is called as estrogen, produced by the what? Ovarian follicle, which are produced in the what? Ovary. So that estrogen is responsible for the development of the secondary sexual character in female, and in male it is what? Testosterone. Okay, so that period where the major changes take place in the female body, beginning of menstrual cycle, development of breast. Okay, so these are the characters which are developed in female. So this will begins at the age of what? 13 or 14. That period where the menstrual cycle start, that period in which the male also show some changes. So teenagers will show the changes like voice get change, change in the pitch of voice also. दाढ़ी मूछें आने लगती है, डेवलपमेंट ऑफ द बेड एंड मुस्टैक. ओके, शोल्डर ब्रॉड होते हैं. फीमेल में डिपोजिशन ऑफ फैट्स होता है कि नहीं. तो मेल में प्रोसेस जो होती है, दैट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके, इन फीमेल में oogenesis जो है वो तो बचपन से ही रहता है, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ एग जो है वो स्टार्ट होता है ड्यूरिंग द पीरियड विल बी कॉल्ड एज प्यूबर्टी. सो दैट पीरियड ऑफ द मैच्योरिटी, the period of the sexual maturity, the period of sexual maturity will be called as what? Puberty. At the age of near about 13 to 14 years. Okay, so changes will take place in the male as well as in female. Psychological changes भी होते हैं. Attraction toward the opposite sex is one of the changes which take place in male as well as in the female. Okay, now the female is start to, that is particular what? The cyclic changes in the uterine wall will be called as what? Menarche. That is the beginning of what? Menstrual cycle. Okay, in male there is the process of spermatogenesis will begin. Okay, so we'll see what are the changes which take place in the reproductive organ. Reproductive organ जो immature रहते हैं वो mature हो जाते हैं और functioning उसका start हो जाता है. ठीक है, चलो. तो विल सी द फर्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देन व्हाट? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देन फर्टिलाइजेशन एंड हाउ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेक प्लेस. ओके, सो विल सी फर्स्ट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल कंसिस्ट ऑफ व्हाट? टू इंपॉर्टेंट ऑर्गन, दैट इज रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. विल कंसिस्ट ऑफ व्हाट? Reproductive organs and reproductive glands. So that teenage period means that is generally beginning of what? Period of what? Puberty. तो puberty period वो start हो जाता है. तो क्या क्या changes होते हैं वो भी हम देखेंगे. तो reproductive organs and reproductive glands, these are the components of what? Male reproductive system. तो reproductive organ कौन से हैं? It will be okay, paired testes, okay,
then paired vasa differentia, paired vasa differentia. Okay, so vas differentia, vasa differentia. Then third, yes, epididymis, paired epididymis. Yes, epididymis opens into what? Vasa differentia. Epididymis के पहले भी tubular lining रहती है, that is vasa efferentia. Okay, then the common duct, जो common pair रहेगी, that is paired ejaculatory duct. Okay, then the urethra, which will open. Okay, the tube will open at the tip of the penis. Okay, तो चलो हम देखेंगे सब ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी देखेंगे, which will opens into what? A reproductive organ will be called as what? Penis. Okay, so we'll write down separately, otherwise you will consider that this is the same organ. It is not the same organ. It will be a penis which is called as what? External genitalia. ठीक है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कौन से हैं? तो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में है दिस इज व्हाट? सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, seminal vesicles are paired, 2 in number. Then prostate gland, the single and paired Cowper glands. The name of the scientist, that is what? Cowper's glands. This is also one of the simple diagram. You can draw this diagram in your examination also. So you can see the paired testes. From that testis, to long tube will be comes out. These are near about 6 meter long tubes which will get coiled around the particular what? Testis from the posterior side. पीछे से ऐसे coil रहता है, ये 6 मीटर लंबी, near about 20 फुट लंबी ऐसी लंबी ट्यूब रहती है. उसके अंदर क्या रहता है ये भी हम देखेंगे. फिर ये ट्यूब देखो यहाँ से ज्वाइन होके यहाँ से बन जाती है ये vas deferens. So this will be a what? Vas deferens. ये आ गया. Okay, now this vas deferens will turn around this particular what? दिख रहा है आपको ये? That is what? Ureters. Okay, and there is a common passage for what? Urine and the what? Semen. तो यहाँ दिख रहा है ये, this will be what? Seminal vesicle. This will be a ejaculatory duct. ये कौन सा है? इसीलिए portion will be called as what? Ejaculatory duct. Okay, then both the seminal vesicle will be open here. This common both the seminal ejaculatory duct will opens into a common junction, जहाँ पर क्या है? Urethra join होगा. At this junction there is another gland will be called as what? Prostate gland. Clear है? And then the urethra will open outside through the what? Penis. So this is the particular what? इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ द पेनिस. इसके अलग अलग नाम है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. ओके, 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा ये इरेक्टाइल टिश्यू के बंडल रहते हैं, और नीचे जो है वो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो दिख रहा है ये बल्ज आउट होकर आता है. ठीक है, ये एक डायग्राम आप निकाल सकते हो, और एक डायग्राम जो स्टेट बुक की है ये एनसीईआरटी में आप निकाल सकते हो, साइड व्यू और लैटरल व्यू.